Hello everyone. How are you all? Preparing for different kind of competitive examinations? Yeah, of course, you are preparing for that. I have come to know that there are so many students who are facing a lot of problem regarding the verbal ability section in English. If I am talking about the competitive examination like NQTTCS, yeah, WILP, yeah, if I talk about the examinations like CAT, yeah, MAT, yeah, Bank PO, if you are preparing for that, there is an important segment in verbal ability, and that is known as sentence rearrangement or parajumbled. कई बच्चे की शिकायत आता है कि सर इसमें इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, मुझे पता नहीं चलता है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कौन सेंटेंस के बाद कौन सेंटेंस को हम कनेक्ट करें. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव आई मस्ट टेल यू that if you are consuming a lot of time, you'll be out of the competition for sure. So आज के इस वीडियो में मैं नीलांजन बोस, द प्रोफेसर ऑफ सिमेज कॉलेज, कुछ 3 क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं, और इसमें आपको डिटेल में हम बताएंगे कि व्हाट आर द ट्रिक्स बाय विच यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इन लेस देन 50 seconds. क्या is it surprising for you? No, 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 no. I am going to make it possible, man. Just wait and watch this video till the end so that you will get some idea what are the tricks by which I am going to solve these questions. तो आज का इस वीडियो अंत तक देखिएगा और इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या ट्रिक्स अप्लाई करते हुए हम लोग लेस देन 50 सेकंड्स में एक क्वेश्चन को, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर्टिकुलरली क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करें, और उस क्वेश्चन को हम डिटेल में आपको बता देंगे कि कितना आसानी से विद इन 50 सेकेंड, लेस देन 50 सेकेंड्स इनफैक्ट हम लोग सॉल्व कर देते हैं. तो हियर आई एम गोइंग टू प्रेजेंट द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Look, the first question, S1 and S6, आप इसमें confused मत हो जाओ. S1 means the beginning one and S6 means the last sentence, right? So first sentence आपको दिया रहेगा in the form of S1 and last sentence भी दिया हुआ है in the form of S6. Now in between PQRS, 4 different sentences are given and you need to rearrange all these sentences. Means I am talking about that PQRS should be arranged properly, but do keep in mind that the first sentence, that is S1, and along with that particular sentence, the rest of the sentences will be arranged. Okay, so you need to focus on the first sentence. Let us talk about what is that. Many scientists are working on safer and better ways to kill mosquitoes. कई साइंटिस्ट लोग हैं जो बेटर और सेफर वे मॉस्क्विटो को किल करने के लिए कुछ वेज को, कुछ उपाय को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ये आपका बिगिनिंग सेंटेंस है. ओके फाइन. Now let us move to the rest of the sentences. Those sentences are given in the form of PQRS. तो कैसे हम लोग पहचान करें नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? फर्स्ट सेंटेंस का कीवर्ड क्या है ना? सेफर एंड बेटर वेज, राइट? तो सेफर और बेटर वेज हम लोग क्यों करते हैं? फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर प्रोटेक्शन. सो व्हाट शुड बी द सेकंड वन? इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए द नेक्स्ट सेंटेंस मस्ट हैव एन एलिमेंट दैट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन. Now, if I go through number P, bringing more of these animals into places where mosquitoes live and breed might help. इसके साथ तो कोई protection वाला कोई संबंध है नहीं. Mosquitoes have many natural enemies like bats, birds, etc. इसके साथ भी protection वाला कोई संबंध तो नहीं है. Now moving to number R, mosquito nets can be used for protection. Here exactly that is the word what I am searching for. प्रोटेक्शन वर्ड यहाँ क्लियरली मेंशन किया हुआ है. सो आपका इमीडिएटली नेक्स्ट सेंटेंस चॉइस होना चाहिए R. Right? So you are starting with R. After S1, you are going to pick R. Now, once you are picking R, just go through the options. Why should you waste your time? You need to save your time. Look, from the perspective of competitive examination, saving time will enable you to move ahead. आप अगर बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो सेंटेंस को लॉजिकली कनेक्ट करने के लिए, कोहेरेंस को मेंटेन करने के लिए, सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए, सो यू विल बी आउट ऑफ द कंपटीशन. यू नीड टू अप्लाई द ट्रिक्स. एंड व्हाट इज द ट्रिक्स हियर? The tricks is that according to the first sentence, we are talking about protection, and in our option, straightforward, the word is written protection. Mosquito nets can be used for protection. So if you're starting with R, going through the options, you are only finding one option that starts with R, and that is option D. So immediately you should take out option D and move ahead. Now, अगर आपका मन में यह आ रहा है कि सर बाकी सेंटेंस को हम देखें, why should you spend, why should you waste your time?
बाय कंसिडरिंग द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। आपको तो टाइम सेव करना है ना, तो आर से अगर एक ही ऑप्शन है, इफ यू आर डेड श्योर दैट आर इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग वन, सो व्हाई शुड यू वेस्ट योर टाइम? एक ही ऑप्शन है आर से, नाउ जस्ट टिक आउट एंड मूव अहेड। फिर भी अभी हम एक्सप्लेनेशन के मोड में हैं और आपको हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए लॉजिकली एक बार कनेक्ट करते हैं हम। आज से अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं, मॉस्क्विटो नेट्स कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट। उसके बाद क्या करेंगे, क्या ये प्रोटेक्शन अब कंपैरिजन है, बट देयर इज नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट एवरीवन फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। तो दो वी आर टॉकिंग अबाउट मॉस्क्विटो नेट्स दैट कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन, बट स्टिल ऐसा कोई वे, श्योर शॉट कोई वे तो है नहीं जिससे डेडली बाइट से आपको बचाव हो सके, मतलब कंट्रडिक्शन। एग्जैक्टली आर इज पेयरिंग विद एस। Now moving to next one, Q. Mosquitoes have many natural enemies like bats, birds, etc. In this particular sentence we are talking about mosquitoes का enemies के बारे में, जैसे bats है, birds है। और लास्ट सेंटेंस में आप देखिए, ब्रिंगिंग मोर ऑफ दिस एनिमल्स इनटू प्लेसेस वेयर मॉस्क्विटोज लिव एंड ब्रीड माइट हेल्प। तो इस केस में उसी को और इन्हांसमेंट कर रहे हैं, उसको और एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। जैसे इनका एनिमीज के बारे में बात किया गया, बैट्स एंड बर्ड्स के बारे में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, बैट्स एंड बर्ड्स को वहां लाइए ताकि मॉस्क्विटोज का जो ब्रीडिंग है उसको कहीं, bringing more of these animals into places where mosquitoes live and breed might help। अगर उसका ब्रीडिंग को रोकना है तो इसका एनिमीज को वहां बुला लेना चाहिए। तो लॉजिकली these sentences can be connected, so you will go for the pairing RS and QP। now only one option, and option D is justifying this one। so in this way within a fraction of second you can get the answer। less than 50 seconds की बात की है, उससे कम समय में आप आंसर को निकाल सकते हो considering the first sentence, right? I hope all of you have understood. It is the easiest trick what I have shared right now with you guys। Now let us talk about the second question। चलिए हम लोग जान लेते हैं second question में किस टाइप का ट्रिक्स है हम लोग अप्लाई करते हैं। Wait। Now if I am talking about the second question, अब देखो कितना आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो आपका दिया हुआ है ए में 10 से स्टार्ट है। नॉट कोई भी पैराग्राफ की शुरुआत क्या 10 से हो सकता है? बिल्कुल नहीं, उससे पहले तो कुछ आना चाहिए। तो ए से कोई ऑप्शन नहीं होगा। एंड इफ यू गो थ्रू द ऑप्शंस, आंसर ऑप्शंस, यू आर नॉट फाइंडिंग एनी ऑप्शन दैट स्टार्ट्स विद ए। चलिए हम लोग मूव करते हैं बी में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो, हियर इज द वर्ड लाइक ऑल्सो। ऑल्सो अगर बात करें तो उससे पहले कोई फैक्ट तो होगा, तभी तो आके हम लोग ऑल्सो का जिक्र करेंगे, राइट? सो बी बी भी आपका बिगिनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी स्ट्रेट अवे एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि वहां बी से शुरू किया गया, राइट? Let us move to C. Cricket has been an extremely popular game in India for quite some time now. This sentence is completely different. It's a fact. That's why it can be the beginning one। चलिए हम लोग रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को भी देख लेते हैं। नंबर डी, इट इज टाइम आवर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट फ्रेटर्निटी पे ड्यू अटेंशन टू अदर गेम्स और स्पोर्ट्स एंड वी रिडीम आवर नेशनल प्राइड इन ओलंपिक गेम्स। अगर ओलंपिक गेम्स का बात करें तो यहाँ पे ओलंपिक क्रिकेट को हम लोग एक्सट्रीमली पॉपुलर गेम मानते हैं और जो इंडिया में बहुत सालों से एक पॉपुलर गेम की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन इट इज टाइम आवर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट फ्रेटर्निटी पे ड्यू अटेंशन टू अदर गेम्स और स्पोर्ट्स एंड वी रिडीम आवर नेशनल प्राइड इन ओलंपिक गेम्स, ये तो कंट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, उसके लिए आपको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो ये सेंटेंस कभी बिगिनिंग नहीं हो सकता है, ये कंक्लूडिंग पार्ट में आ सकता है। एंड लास्ट वन, option E, however due to this reason, what reason? So E cannot be the beginning one, so option A straight away eliminated, option B straight away eliminated। now you are left with two options, C B E A D and D C E A B। so what should you select? What you are going to select? The beginning one। now इट इज टाइम और गवर्नमेंट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, आपको हम बता दिए कि ये आपका एक सजेशन दे रहे हैं, तो सजेशन से आप सेंटेंस को कोई पैराग्राफ का बिगिनिंग नहीं कर सकते हैं। सो यू शुड स्टार्ट द पैराग्राफ विद द फैक्चुअल थिंग एंड दैट इज ओनली वन thing। in C it is written, cricket has been an extremely popular game in India for quite some time now। that should be the beginning one। so once you are dead sure that C is going to be the beginning one, go through the option, you will find only one option that is starting with C। in that case, without wasting time, straight away you take it out and you move ahead। so this is the tricks।
Look, you need to identify which is the beginning one. उसके बाद straight away ऑप्शन में चल जाओ. अब देख लीजिए क्या एक ही ऑप्शन है जिससे उस सेंटेंस को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं. अगर ऐसा है तो आप बाकी सेंटेंस को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू आर सपोज टू सेव योर टाइम. एंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, कंपेटिटिव एग्जामिनेशन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, ये ट्रिक्स बहुत असरदार होता है, आपका टाइम सेव कराते हैं और आप कई क्वेश्चन को विद इन द क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं. राइट नाउ, as I am explaining, so better I will explain the full thing. अभी चलिए लॉजिकली हम कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. क्रिकेट हैज बीन एन एक्सट्रीमली पॉपुलर गेम इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. इससे हम लोग शुरुआत किए. नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो क्रिकेट रिमेन पॉपुलर इन इंडिया. ये एक्सटेंशन है उस सेंटेंस का. ब्रिटिश पीरियड में भी क्रिकेट बहुत पॉपुलर हुआ करता था. तो ऑब्वियसली these can be logically connected. I am talking about C and B, correct? Now let us move to, however, due to this reason, other games and sports did not receive the required attention they deserve. Now contradiction is there. क्रिकेट ब्रिटिश पीरियड में भी पॉपुलर था और आज भी पॉपुलर है, लेकिन इस कारण के चलते हुए क्या हुआ? व्हाट वाज द आउटकम? द अदर गेम्स एंड स्पोर्ट्स डिड नॉट रिसीव द रिक्वायर्ड अटेंशन दे डिजर्व. तो उसके बाद क्या होना चाहिए? नेक्स्ट आपका आना चाहिए फर्स्ट सेंटेंस. दस डिस्पाइट दैट यूनियन वी हैव नॉट डन वेल इन ओलंपिक गेम्स. तो ओलंपिक गेम्स में हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाए. जो ओलंपिक गेम्स में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि उसमें ध्यान नहीं दिया गया ना. तो ये तो एक्सटेंशन, ये तो रीजन बता रहे हैं. ड्यू टू दिस रीजन के चलते हुए वहां 10 वर्ड को इस्तेमाल किया गया है. तो आपका लॉजिकली कनेक्ट हो रहा है सी बी ई देन ए, एंड फाइनली यू विल एंड अप विद डी सेंटेंस. दैट इज, इट इज time our government and corporate fraternity pay due attention to other games and sports, and we redeem our national pride in Olympic Games. This is the suggestion. This is the suggestion that has been placed at the end of the paragraph. So in that way, the correct answer is going to be option C, and it is CBEAD. I am quite sure that all of you must have understood whatever has been delivered to you right now. And talking about the tricks, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन लेस देन 50 सेकेंड्स में हम लोग आंसर को पिक कर सकते हैं, क्योंकि फैक्चुअल सेंटेंस यहाँ पे सी है और उसके बाद हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं उसका एक्सटेंशन को, एंड दैट इज बी. तो सी बी अगर आपका बिगिनिंग है, instantly you should pick option C. Right? Now let us move to question number 3, and that is the last question of this particular session. And उसके जरिए भी आपको कुछ ट्रिक्स के बारे में हम बताएंगे और आपको ये तरीका बताएंगे कितना जल्दी आप आंसर को पिक कर सको. Now here comes the last question. Environment Education Unit of Center for Science and Environment has always been working towards providing easy to understand reading material. अभी एक particular entity के बारे में बता रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, that is A में. A का अगर बात करें तो Environment Education Unit और Center for Science and Environment has always been working. तो ये एक एंटिटी है जो हमेशा वर्क कर रहे हैं. राइट नाउ नेक्स्ट में ऑप्शन मैंने बी में जो दिया हुआ है देयर न्यू पब्लिकेशन, तो देयर मींस इट्स अ प्रोनाउन. तो देयर के लिए तो हम लोग यूज नहीं कर सकते, कोई भी पैराग्राफ को स्टार्टिंग हम देयर से नहीं कर सकते हैं. इनवेरिएबली द क्वेश्चन कम्स दैट ये देयर किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं. राइट सो बी से तो कोई ऑप्शन होगा नहीं. इफ आई गो थ्रू द आंसर ऑप्शंस इन ऑप्शन डी, इट इज रिटन दैट इट इज स्टार्टिंग विद बी, सो दिस ऑप्शन विल बी इमीडिएटली एलिमिनेटेड. Right? Moving to C. It unfolds in two sections: climate change, how to make sense of it all. Now it, beginning word, just look out, just watch out for the beginning word, that is it, and it is a pronoun. It always represents a noun. तो इससे पहले कोई noun तो आना चाहिए, तो C से कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए. आंसर ऑप्शन में C से है भी नहीं. So be sure about it. Now D, and natural resources, how to share and care. इफ यू स्टार्ट अ सेंटेंस विथ एंड, इसका मतलब उससे पहले भी कुछ आना चाहिए, तो बिगिनिंग तो नहीं होना चाहिए. डी, तो डी से एक ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में इट इज स्टार्टिंग विथ डी, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा आपका स्ट्रेट वे. सो आप बी से शुरू नहीं कर सकते हो, आप डी से शुरू नहीं कर सकते हो. सो ऑटोमेटिकली बी एंड डी स्ट्रेट वे एलिमिनेटेड हो गया. डन. अब E, however, they are introduced to students not as a paragraph to memorize, but as an activity to do. If a sentence starts with however, it cannot be the beginning one. और आपका आंसर ऑप्शन में E से है भी नहीं. Now you will be straight away going to either A or C. अब अगर A के बाद हम C को कनेक्ट करते हैं,
Environment Education Unit or Center for Science and Environment has always been working towards, already I have told you that it is talking about an entity. And next sentence में अगर आप ये लिखोगे, it unfolds in two sections, climate change, how to make sense of it all. उसके बाद आना चाहिए था D, तो ए के बाद अगर आप सी को पिक करते हैं उसके बाद आना चाहिए डी, क्योंकि उसी का सेकंड पार्ट बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में ए सी के बाद तो ई लिखा हुआ है, इन दैट वे यू आर गोइंग टू एलिमिनेट option A, that is A, C, E, B, D, it will be eliminated. Now you have reached out the correct answer or the correct option, and that is A, B, C, D, E. गॉट इट। अगर हम लोग क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में इसको सॉल्व करने की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स आप इस तरह से इसको अरेंज करोगे। क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में कैसे पिक करोगे, देखो फर्स्ट ए में इट इज टॉकिंग अबाउट द एंटिटी, सो इट विल बी द बिगिनिंग वन, तो ए से तो बिगिनिंग होगा, यू विल बी डेड श्योर। उसके बाद पब्लिकेशन की बात किए तो पब्लिकेशन बी में लिखा हुआ है, सो ऑटोमेटिकली ए के बाद बी। रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इन द आंसर ऑप्शन ओनली वन ऑप्शन स्टार्ट्स विद ए बी। देन सी में एक पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में बात किया और डी में उसके एक्सटेंशन के बारे में बात किए, सो कॉम्बिनेशन विल बी ए बी सी डी एंड फाइनली एक last sentence, and that is E. In that way, we are going to conclude that yes, option C is going to be the correct answer. As the sentences are written, that will be the flow. Students, I am quite sure that the logic has been completely understood by you. In the coming videos, definitely I'll be presenting more questions to have clarity in your mind. You will be dead sure and you'll be able to solve the sentence rearrangement questions within the quickest possible time. Okay, fine. But one thing I must tell you that keep on practicing. अब practice करना मत छोड़िए, क्योंकि it's all about practice and that will make you perfect. और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर। आपका डिमांड को फुलफिल करते हुए आज का इस वीडियो में आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। आपका जो क्वेरीज था, आपका जो डिमांड था, सर ट्रिक्स के बारे में बात कीजिए और कितना आसानी से हम लोग क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में आंसर कर सकते हैं, सेंटेंस रीअरेंज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट। And that's all from my side today. Thank you so much. Take care. Keep on practicing and just watch out for my next video, which is going to be really, really interesting for you. Thank you.